Gaming PC under 60,000 rupees budget gaming build. इस वीडियो में I'll be suggesting all the components from case to motherboard to CPU and I have gone through various e-tailers. तो जो भी lowest price मिला मेरे को at the time of making this video वो इसमें included है. This is my list of components. अगर आपके पास कोई और suggestions है तो do let me know in the comment section. चलो शुरू करते हैं. जो सबसे पहला component है वो है सबसे बड़ा component. That's the cabinet. तो कैबिनेट के लिए आई एम चूजिंग एंट ई स्पोर्ट्स एलीट 1000 TG मिड टावर गेमिंग कैबिनेट 2421 रुपये की है वेदांत कंप्यूटर्स पे. अगेन इट्स एन एंट्री लेवल कैबिनेट बट इसमें क्या है दैट यू गेट साइड ग्लास पैनल जो आजकल बड़ा फैशन में है. इट्स एन एंट्री लेवल कैबिनेट. ठीक है, सामने आप देखो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ रूम फॉर एयर फ्लो. तो एयर फ्लो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बट फिर भी अगर इसके हम स्पेसिफिकेशंस देखें ड्राइव बेस काफ़ी हैं, एक्सपैंडेबिलिटी ऑप्शंस हैं, 3.5 इंच की 2 हैं, 2.5 इंच की 4 हैं. फैन सपोर्ट जो है फ्रंट में 120 mm के 2, टॉप पे 120 mm के 2, रेयर में 120 mm का 1. लिक्विड कूलिंग सपोर्ट भी है, फ्रंट में 140 mm का रेडिएटर, रेयर में 120 mm का रेडिएटर है और टॉप पे भी 120 mm से 240 mm का रेडिएटर आप लगा सकते हैं. वीजे कार्ड लेंथ एंड CPU कूलर हाइट मोर लेस स्टैंडर्ड हैं. फ्रंट IO पैनल पे USB 3 पोर्ट है, USB 2 पोर्ट है, ऑडियो इन, माइक इन. सो decent ऑप्शन फॉर एन एंट्री लेवल कैबिनेट. मूविंग ऑन, पावर सप्लाई. भाई आई ऑलवेज सजेस्ट टू गेट अ गुड पावर सप्लाई बिकॉज ये कंपोनेंट है जिसके ऊपर बाकी सारे कंपोनेंट्स रिलाई कर रहे हैं. इफ़ यू गेट अ शिटी पावर सप्लाई एंड इट ब्लोज अप, it's going to take your system with it. Right, so I would always suggest go for a good power supply. 80 plus bronze power supply EVGA का 450 watt, which will be enough for this build because it's a budget entry gaming build, but with a bit of headroom as well for future expandability. तो 450 watt का है ये, 2689 rupees का है. And EVGA is a decent brand when it comes to power supplies. Moving on, if you talk about storage, I'm going with a single 500 GB NVMe drive. It's a PCI NVMe drive for 3,369 rupees, Kingston NV1. Go with an NVMe drive, PCI drive, because that has more read-write speeds as compared to SATA. तो of course आपकी OS boot up, आप game load times वो सब better रहेंगे. So you can go with this drive. Prices are pretty phenomenal when it comes to storage. तो आप सोच सकते हैं 500 GB because 250 GB कम रहेगी and 1 terabyte will be on the expensive side when it comes to a budget gaming build. So 500 GB I believe is the sweet spot. Moving on to RAM, I'm going with the ADATA XPG Game XT30. 8 GB की stick है, 3200 MHz, 8 GB into 2. So gone are those days जहाँ पे 8 GB में gaming वगैरह और ये सब हो जाएगा. We are making a gaming PC, a budget gaming PC with future expandability and future proofing because 8 GB into 2 अगर अभी ले लोगे 16 GB is decent enough for gaming. तो 2275 रुपीज़ की एक स्टिक है, into 2 कर लीजिए. For the motherboard, I'm going with an Asus Prime H610M ED4 motherboard. It's an M80X motherboard. Kind of suits our cabinet selection as well. 7425 रुपीज़ का motherboard है. आई नो इससे महंगे भी हैं, B660 सीरीज़ के भी मदरबोर्ड्स हैं, 2-2,500 रुपये महंगे हैं. बट सिंस दिस इज़ अ बजट बिल्ड, इट्स अ डिसेंट मदरबोर्ड. Asus Prime H610M ED4. इसकी थोड़ी सी अगर हम स्पेसिफिकेशंस देखें, रेडी फॉर 12th जनरेशन इंटेल कोर सीरीज़. 2 डिम स्लॉट्स हैं इसमें, 64 GB मैक्स मेमोरी सपोर्ट है, DDR4 3200 MHz तक मेमोरी सपोर्ट है, XMP सपोर्ट करता है ये. VGA आउट है, डिस्प्ले पोर्ट, सब पोर्ट, HDMI पोर्ट, दीज आर ऑल अवेलेबल. एक PCI Gen 4 X16 स्लॉट है. नाउ कीप दिस इन माइंड बिकॉज वी नीड दिस स्लॉट फॉर आवर ग्राफिक्स कार्ड. सो GPU स्लॉट जो है वो PCI Gen 4 है. देन वी हैव वन मोर PCI Gen 3 X1 स्लॉट. 2 M.2 स्लॉट्स हैं एंड 4 SATA स्लॉट्स हैं, 6 gigabits per second SATA 3 स्लॉट्स हैं, विच इज़ गुड ड्राइव एक्सपैंडेबिलिटी ऑप्शंस. लेकिन जो इसमें M.2 स्लॉट है, एक स्लॉट है PCI Gen 3 X4 एंड द अदर स्लॉट इज PCI Gen 3 X2, whereas and plus we've got 4 into SATA 6 gigabits per second SATA 3 ports. Gigabit Ethernet भी है. Rare USB panels पे multiple options for connectivity, USB 3.2 Gen 1, USB 2, front USB भी ports हैं, total 6 ports. Realtek 7.1 surround sound high definition audio codec है.
Again, I would not expect it to be phenomenal, but still, ठीक है, 7.1 surround sound in this budget price is fine. Again, it's a budget and entry level motherboard, so don't expect phenomenal sound stage. And it's a decent board coming in at 7,425 rupees. Now the star of the show, the CPU. I'm going with an Intel Core i3-12100F because we will put in a discrete graphics card. It's a quad core 8-thread CPU, 12 megabyte का cache है and up to 4.3 GHz का boost clock है. This comes in at 9,289 rupees. 12th gen है, so it is not that far off from the current generation, which is the 13th gen. Now for the card, I'm going with a Sapphire Pulse RX 6500 XT 4GB gaming graphics card. I know, it's a bit of a speculative choice, but when it comes to PCI Gen 4 gaming, PCI Gen 4 support, तो ये कार्ड फिर भी decent है. 17,699 rupees का है. You can't beat anything else at this price, and since this is a budget gaming build, I would say that it's a decent fit for that build. Sapphire hai. There are issues with warranty with Sapphire cards. I would not recommend Sapphire until unless it's a do or die situation. आपको ठीक ठाक 1080p पे ठीक ठाक गेमिंग दे देगा. अराउंड 50 फ्रेम्स पर सेकेंड आपको मिल सकते हैं. अगेन डिपेंड्स अपॉन द गेम, हाउ ऑप्टिमाइज दैट गेम इज एंड व्हाट काइंड ऑफ विजुअल प्राउएस और फिडेलिटी यू आर लुकिंग फॉर. तो अगर बहुत हाई फाई आपको गेमिंग करनी है, बहुत हाई फाई AAA टाइटल्स खेलने हैं, you will have to lower down the game settings, the video settings, but still 1080p pe it can give you a decent gaming experience. So RX 6500 XT is the card of choice. Now moving on to the monitor. For the monitor, I'm going with a Samsung IPS panel monitor. It's a 22-inch flat monitor. 8,871 रुपए का है, 8,871 rupees. This is my monitor of choice. 22 inch है, ठीक है, it's not 24 inches, but it's a full 1080p panel plus it's an IPS panel. तो IPS panel जो है, it will give you good color reproduction. Samsung के panels are decent. Entry level panels are also decent. Plus it has a 5 milliseconds gray to gray response time, which is okay. A bit slow, but it is okay with a max frame rate or refresh rate of 75 Hz. I can live with that. At around 8,871 rupees. अगर इससे थोड़ी कम रेंज में जाना है तो LG का भी एक और 22 इंच का मॉनिटर है. दैट इज द LG 22MP400B. इट्स अ 22 इंच मॉनिटर फॉर 8,100 रुपीज़. देखो सिर्फ 600 रुपये का फ़र्क है. एंड देखो 500-600 रुपये के लिए यू विल गेट अ VA पैनल. रिस्पॉन्स टाइम इज़ द सेम. इट्स अ फुल HD पैनल, 1080p, 22 इंच का पैनल है. You will basically degrade from an IPS to a VA panel. तो VA panel बहुत अच्छा नहीं है as compared to IPS when it comes to color reproduction. Monitor और ये सब मिला के it comes out to around 56,000 rupees. अभी हम कैलकुलेटर में देखेंगे how much it adds up to. 3,000 रुपये आप ऊपर से लगा लो, हेडफोन्स एंड कीबोर्ड माउस कॉम्बोज. 1,500 रुपये का अच्छा खासा कीबोर्ड माउस कॉम्बो आपको मिल जाएगा HP का, रेड गियर का, एंड 750-800 रुपये का रेड गियर के आपको क्लोक हेडफोन्स मिल जाएंगे. 1,000 रुपये 1,200 के आसपास आप यू कैन गेट डिसेंट एंट्री लेवल हेडफोन्स. सो टोटल जो बनता है वो 59,313 रुपीज़ बनता है, ठीक है, ऑफ दिस बिल्ड, इंक्लूडिंग accessories, the keyboard mouse, including headphones and including the monitor. So monitor, cabinet, power supply, CPU, RAM, everything in 59,313 rupees. I hope this video would be helpful if you're planning to build a PC, that too a budget gaming PC in 2022. These prices are at the time of making this video, that is the 12th of November 2022. Prices can fluctuate, and again, I have no tie-ups with any of these retailers. Thank you for your time. I hope this video was helpful. You know what to do. Like, share, subscribe, comment. Bye bye.